वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर एक्चुअली मूविंग आउट ऑफ द स्टूडियो एंड वी आर हियर इन लाहौर to talk to someone very, very special. Mr. Asif Akram is with us today. He's the Chief Operating Officer of Systems Limited, Pakistan's largest IT company. I'm very, very excited to have this conversation. We're in a very interesting time जहाँ पर IT का boom हो रहा है, बड़े बड़े numbers आ रहे हैं. शौकत तरीन साहब कहते हैं $50 अरब आ जाएगा कुछ अरसे में. एक्सपोर्ट्स हमारी सारी आसमान पे चली जाएंगी, हम अनलिमिटेड गाड़ियाँ खरीद सकेंगे. And so I want to understand, at the heart of it, systems is really revolutionizing a lot of what's happening in this industry. Sir, thank you so much for being part of the show. Welcome. Assalamu alaikum, everybody. Thank you for this opportunity and welcome to Systems. Thank you. You're in Studio 77. Yeah, this is our design studio. It's pretty amazing. I just had a tour and you guys are doing some phenomenal work. Yeah, and we are creating innovation right here and you're sitting at the center of it. So welcome. आसिफ भाई, मुझे पहले तो ये बताएं कि I'm going to start off with very, very basics. कहाँ पर आप where were you born और early life आपने कहाँ गुजारी है? So born and bred in Lahore. Right. Right here. I went to. I come from a service man family in the sense that my father was a doctor, my uncles and aunts are engineers and doctors. Right. that the typical वो जो उस ज़माने की चीज़ें educated. My grandfather, both my grandfather was a professor of chemistry. My maternal grandfather was a heart specialist. My great grandfather was a mathematician and a poet. So if you know, in Lahore there is this Australia Chalk जिस पे ख्वाजा दिल मोहम्मद road है. That's my great grandfather, and he was famous for mathematics and poetry. Interesting. So a lot of people who listen who've gone to schools at that time had Dil's mathematics and Dil's algebra, and that was my great grandfather. One of my chachas is a singer as well. He is Dr. Amjad Parvez. He's famous for his singing, but he's a PhD doctor. Achha. And my father was a medical doctor. So I come from that family. Pretty amazing family. You have that sort of art as well. Yeah, art as well, and then the science as well in that. And my brother's an engineer, and my sister was teaching. So all of that. We come from my mother was the president for Lahore chapter for All Pakistan Women Association. So she's been in an NGO and a social worker all her life. So born bred in that family. Right. Started off at a Catholic school here, St. Anthony's. Right. Very famous school in that era. So St. Anthony's High School. Yeah, I started my schooling in 1978. Right. And I did went to the metric about 87, and then so St. Anthony's was a great experience. From let's say nursery to metric, all from St. Anthony's. All from St. Anthony's, and वो fathers और nuns वाला ज़माना था. Right. तो not co-ed, a full boys school. Right. ये Lawrence Road पे लाहौर में है, और our principal was a father, and then all the vice principals and all were brothers. There was a church next to it, so very strict. So मतलब the memories are very good education, very disciplined, but also जब आप late होते थे तो you would not be allowed to go in. अब तो ये unheard formula है ना, और आप ground में खड़े होते थे and you get caning, and it was normal to get punished when you're not studying well. Right. अब तो थोड़ा सा ज़रा culture आगे बढ़ गए हम लोग. So great time there. Did my metric in 87, and then went to FC College, Former Christian College. Right. And did 4 years over there. अच्छा. So FSC plus BA? FSC or BSc. So not इतना like नहीं था, तो I didn't get into my brother got into the engineering university, but I did not. Right. So जो engineering university या उधर नहीं जाता था, तो the other option was you do your 2-year BSc उसको को दी थी. तो math, stats, physics में वो BSc कर ली, because I was a non-biology student. So I was more of an engineering student. Right. And graduating in 91? Graduated then BSc in 91. And then my parents very interestingly said कि यार अब तुम करोगे क्या? मुझे भी नहीं पता. तो I had an uncle who was at Ferguson. तो उन्होंने कहा अच्छा इस तरह करो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ. अच्छा ठीक है चले. At that time you are young and all of that. 20 years old. बड़ा आपको बता दे तो ठीक है. So he said कि इस तरह है कि अगर तुम, क्योंकि तुम
engineering से होके आए हो, so what you would not get is a 4-year chartered accountant, you'll get a 5-year one, but आओ articleship start करते हो. So Ferguson में हो गया. And then that didn't feel right to me. I was there, I said let's start and all of that. So essentially you were doing standardized accounting और साथ साथ आप पढ़ के जो है वो articles दे रहे थे. अभी शुरू किया था. So there's a story, there's a twist to that. And then I spoke to a friend one time and he said कि पता है कि यहाँ पे एक दफ्तर खोला है जहाँ पे ना वो I-20s दे रहे हैं US की. तो मैंने कहा अच्छा यार ये भी कोई चीज़ होती है, यू नो, BSc करके और उसमें से निकले हुए थे. So there was here in Lahore only there was a like an agency who had a relationship with a university in Indiana, US. Right. So went there and said कि मैंने सारे को कहा आ जाओ अगले दिन फीस दो, तो उन्होंने कहा हम अप्लाई करेंगे. And a couple of weeks later they said कि यार I-20 आ गई, एडमिशन के लिए तुम्हें जाना है. बट आपको पता है आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, उस वक्त वीज़ा वाज अ ह्यूज, US वीज़ा वाज अ ह्यूज इशू, क्योंकि अफगान वॉर वगैरह का सिलसिला था, वो चीज़ें ज़रा टाइट थी उस वक्त वीज़ा वाइज. एंड आई रिमेंबर आई स्पोक टू माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स कि क्या यार तुम US कैसे. मैंने कहा अप्लाई करने दें, वीज़ा तो लगना ही नहीं है ना, मतलब नो वे कि मैं एक एजेंसी से. एंड सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि एजेंसी जो है आपको वो I-20 वीज़ा लगवा के देगी, I-20 दे देगी और आपको यहाँ पे वीज़ा लगवाना है ना. उन्होंने तो सिर्फ एडमिशन दिलवा दिया. ठीक है, एडमिशन इन XYZ यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने एडमिशन दिलवा, फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसके बाद. और उसके बाद मैंने खुद वीज़ा अप्लाई करना. अब वीज़ा के लिए आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन. एंड आई रिमेंबर पेरेंट्स से बात हुई तो उनका तुम्हारा कहाँ लगना है यार वीज़ा. वी वर लाइक अ सर्विस फैमिली, नॉट very well connected, you know, middle class family and all of that. मैंने कहा चले अप्लाई तो करने दें. उस ज़माने में ये होता था कि you would not get an, now तो you go online, apply, appointment, और ना ये शिमला पहाड़ी के पीछे अमेरिकन काउंसलेट मूव हुई थी. They used to be somewhere else and then they moved, and it was the first week there. Right. But the norm was that there was a queue that was made. The earlier you went, the faster you're actually going to get in the queue. So I remember CT70 होती थी हमारे पास, तो अब गए वहाँ पे और रात को 2:30 बजे जाके लाइन में लग गए. कागजात क्या थे, मतलब I-20 थी, घर के कागज़ थे, पेरेंट्स का थोड़ा सा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट. 90% श्योर, बल्कि मेरे पेरेंट्स तो 100% श्योर थे कि इसका वीज़ा नहीं लगना. आ जाएगा वापस, शौक पूरा कर ला, इसको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराएंगे. ठीक है ना. So I was going to be destined to be a chartered accountant, and Ferguson से chartered accountancy करना है. Nothing better और सबसे बेहतर जॉब मिल जाएगी उसके बाद, you know, better than anyone else. Right. Stood in line. I remember I was in the first 10 people in the line. वो 2:30 बजे खड़े हुए वहाँ पे करते करते 8 बजे के करीब उन्होंने वो दरवाजे खोले, कागज़ लिए, 9 बजे अंदर गए. एंड आई हैड एन इंटरव्यू about 10-11 o'clock, and the lady on the other side looked at my documents and said कि क्यों जा रहे हो. मैंने कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ. तो वापस आओगे, because the problem was will you return or not. Right. It was not about will you go. मैंने कहा जारी बात है, वापस आऊँगा, क्या होगा, ये यही है, और ये मेरे वाले साहब का फैमिली इधर है वो. एंड आई रिमेंबर शी वाज फाइलिंग हर नेल्स व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी. आई रिमेंबर इट लाइक really clearly. तो वो nails फाइल हो रहे थे और बातें हो रही थी. She was probably an American, so it was all happening, and I have many people there, and I said मैं तो nowhere, कैसे वीज़ा लगेगा, कैसे तो जाऊँगा कैसे. And 5 minutes interview, and she said okay, have a seat, I'll stamp your visa. Like शॉक ऑफ then and there. हाँ, उसने कहा 2 घंटे बाद आ जाए. उस वक्त उसी वक्त होता है, 2-3 घंटे बाद आपको मिल जाएगा, आप चले जाए. Came out. अदर पीपल वो कह रहे हैं मेरा लगा नहीं है, मुझे तो वो कह रहे हैं घर चले जाओ, बेटर यूनिवर्सिटीज एवरीथिंग. किस्मत की बात है. अब मैं उस वक्त घर चला गया. आई टोल्ड माई मदर, देयर मदर स्टार्टेड क्राइंग. फादर शॉक कि ये हुआ क्या है. वापस गया 11-12 बजे या व्हाटएवर इन द आफ्टरनून, सेकंड हाफ. तो 6 महीने का मुझे उन्होंने ठीक है वीज़ा लगा दी. 6 महीने का वो ये कह रहे हैं कि आप जाएं, जाके एडमिशन लें, और उसके बाद आप दोबारा वापस आए या मुल्क से बाहर निकलें और दोबारा उसको वीज़ा लगवाएं, जो भी आपका प्रोग्राम होगा 4 साल का, जो भी. तो आई एट दैट टाइम हैड अप्लाइड इनटू कंप्यूटर साइंस, सो आई स्टार्टेड इन दिस इंडियाना यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस. एनीवे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज 91 92 मे बी. अब 91 ये अगस्त 91 में मैं गया था. ठीक है, दिस 91 and you're talking about computer science. Yes. ठीक है, so this is very fascinating to me. Why? You're sitting in Pakistan, you haven't been abroad. चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप बात करते हैं, आई अंडरस्टैंड. उस वक्त के बड़े बात ये करते थे सारे. माई फादर वाज अ बैंकर, अंडरस्टैंडेबली सो. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर. कंप्यूटर साइंस तो मुझे याद है, माई ब्रदर डिड कंप्यूटर साइंस इन 1997, एंड पूरा खानदान कहते पागल है, क्या कर रहा है.
and that's Pakistan, right? So 91 में तो this would have been like, what are you talking about, computer science? तो वो जो पीरियड था ना FSC और BSc के दरमियान, that was a very interesting period because मुझे मेरे भाई को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी UET में मिल गया था, मुझे किसी भी तरह नहीं मिला था। तो उस दौरान फ्रेंड्स ऑफ वो गेटिंग टुगेदर, तो यहाँ पे एक वो इंस्टीट्यूट खोला था कंप्यूटर साइंस का नया, ठीक है, और उसके अंदर हमने दाखिला ले लिया कोर्सेज करने के लिए, ठीक है। वहाँ से मेरा थोड़ा सा शौक डेवलप हुआ कंप्यूटर्स का और प्रोग्रामिंग का, और ज़रा मज़ा आने लगा। और कौन से कंप्यूटर थे उस ज़माने में? उस ज़माने में वही आपके जो बड़े वाले कंप्यूटर सारे 386 और 486, और तो किसी के पास कोई मैक होना छोटा सा, वो भी वो वाला एप्पल का जो वो सिंगल जिसके अंदर फ्लॉपीज थी। तो हम शाम को जाके वो इंस्टीट्यूट में थोड़ा बहुत सीखते थे और वो अच्छा लगने लग गया। BSc कर रहे थे तो उस दौरान भी इवनिंग में 1-2 कोर्सेज गए। सो आई स्टार्टेड गेटिंग फैसिनेटेड बाय दिस न्यू एरिया। आई थिंक थोड़ा सा इसमें ये भी था कि मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला था, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी एन इंजीनियर एंड आई डिडंट वांट टू बी अ बिजनेस और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट दैट टाइम। STEM में रहना है, हाँ रहना है। तो ये लगा कि यार ये चीज़ कुछ अच्छी होगी। ये भी नहीं पता था कंप्यूटर साइंस वर्सेस कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ़र्क क्या होता है। एक ही डिग्री होती थी, आप कंप्यूटर साइंस में चले जाएं विच इज मोर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, या आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले। अच्छा, वो इलेक्टिव्स की बेसिस के ऊपर आप ऊपर नीचे वो AI वगैरह ये तो चीज़ें है ही नहीं ना उस ज़माने में। सो दैट स्टार्टेड, और कुछ करना था ना डिफरेंटली। अब वो भाई साहब थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कजन्स वगैरह सारा कुछ, हम ज़रा फंस गए थे थोड़ा सा। सो दैट्स हाउ वी अप्लाइड, आई अप्लाइड देयर, एंड देन दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड हैपनिंग, एंड देन दैट्स हाउ द डिग्री केम थ्रू। रीच्ड इन August 91 in the US. ठीक है, 4 years program? 4 years program. पहुँचे, कुछ पता नहीं था। Right. How was it? अब पहुँच गए वहाँ पे, ठीक है ना। अब तो किसी ना किसी तरह रुला के सबने का, एंड माई वीज़ा टू माई ट्रैवल वॉज अ 1 week only, बिकॉज मैं लेट था हर चीज़ के लिए। इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज। अब नहीं, अब तो हम एप्लीकेशंस बच्चे भरते हैं, ये वाले ऐसे वो वाला ऐसे लिखो, कुछ भी नहीं, सीधा बस 1 हफ्ता था, वीज़ा लगा, उसके 1 हफ्ते बाद जाना था। अच्छा, और दिमाग में सोचा हुआ नहीं था कि जाना है, तो एक मेंटल बैरियर भी होगा कि यार अभी 1 हफ्ते में सब रैप अप करने जाना है। आई रिमेंबर मुजम्मिल, मेरी मदर ने मेरे बैग में, मेरा जो बैग था वो ऐसा था कि वो अनशेप्ड हो गया था, उसमें पतीली भी रख दी और उसमें ये भी रख दिया। लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी नहीं थी US की, तो आई हैड टू गो टू कराची, एंड कराची से पैन एम लेनी थी। पैन एम बंद हो गई है, आपको पता ना, मतलब उन्हीं दिनों एंड की। तो वो बैग था जो कि फुल भरा हुआ चीज़ों के साथ, और मसाले भी उसमें, और ये भी पता नहीं कहाँ जा रहा है, कब आएगा, और शी गेव मी अ रेसिपी बुक, पता नहीं क्या करने जा रहा है। तो आई रीच्ड कराची, वहाँ पे आई फैमिली, माई मामू, माई खाला, ऑल ऑफ देम। माई मामू वॉज वर्किंग फॉर शेल, माई खाला एंड खालू आर डॉक्टर्स, खालू इज़ इन आगा खान, एंड देन माई खाला इज़ द बोर्ड चेयरमैन फॉर ग्रीन स्टार। सो दे टॉक्ड एंड एवरीबडी सेइंग पता नहीं अब ये कहाँ जा रहा है बस। So took the faith of, you know, उस वक्त leap of faith ली, और उसके बाद landed. Land किया। I remember my flight was to New York. New York से मैंने South Bend, Indiana पहुँचना था, which was through a Greyhound. Right. सब booking वगैरह हुई हुई थी. I got, and they were good. The university was going to pick me up from there. बिल्कुल नए, first time out of Pakistan. Never ever before, 19-20-year-old kid. So I remember मेरी flight delay हो गई और all of that. So I couldn't take the Greyhound on time. I reached the next morning rather than the evening. Right. Reached, no. I had to reach in the morning. I reached at night. रात को मैं पहुंचा. Right. अब रात को 9-10 बजे वहाँ पहुंचा तो कोई आया ही नहीं लेने। यूनिवर्सिटी एड्रेस था, पर यूनिवर्सिटी तो बंद हो गई। तो वहाँ एक टैक्सी वाले इसको पकड़ा, उसने कहा मैंने कहा मैं तो इस कहता यूनिवर्सिटी तो इस वक्त बंद है, और अभी सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुए थे ना, स्टार्टर। राइट। उसने कहा रात तुम्हें कहीं गुजारनी पड़ेगी, यहाँ करीब आरबीज़ है। आरबीज़ इज़ अ फास्ट फूड चेन लाइक मैकडॉनल्ड्स, वहाँ मैं तुम्हें बैठा देता हूँ। मैं ऐसा करूँगा, काला था वो, मतलब एंड नाइस अफ्रीकन अमेरिकन, ही सेड मैं सुबह तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँगा। राइट, ठीक है। तो अच्छा, उसने इतना कहा कि बेचारा पता लग रहा है इसका सीन बैड है। सीन बैड है। मैं जाके अपना वो बैग, अबलॉन्ग सा बैग बड़ा सारा सा लेके आरबीज़ में बैठ गया, और रात को कोई 12 से लेके मैं वहाँ पे बैठा रहा। कुछ डॉलर्स थे मेरे पास, सारा कुछ था, तो कुछ खा लिया, व्हाटएवर। मुझे याद है सो गए, जाग गए 7 बजे। ही वॉज वेरी नाइस मैन, ही केम एंड ही पिक्ड मी अप एंड ही टुक मी टू द यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी तो बंद है, तो बना तो वहाँ सामान के साथ खड़े हो गए, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। देन राइट,
got checked into the dome and everything, and that's how the And so 91 to 95 you're doing computer science. What was computer science का program like at the time? It was वो चीज़ें हम सीख रहे थे जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती ना, वो मतलब आपकी बैक स्क्रीन और C और COBOL और Fox Pro and all of that, बट कॉन्सेप्ट्स यही थे सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उससे बेस बहुत अच्छी। अच्छा, अमेरिका का जो प्रोग्राम है स्टडीज़ का, पहले 2 साल आप ज़्यादा फोकस करते हैं ह्यूमैनिटीज़ और इन सब चीज़ों पे, आपके कंप्यूटर साइंस के कोर्स चल रहे होते हैं, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब आपको पढ़ने पड़ते हैं, उससे बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई। सो आई स्पेंड अबाउट अ ईयर इन इंडियाना, बट एक मसला हो गया ना, वहाँ थे हम लोग, तो एक दिन अक्टूबर को उठे तो सारा बाहर वाइट, बर्फ ही बर्फ, लाहौर से गए Are you gonna take तुमने कहाँ फंस गए यार, आके उतरे गाड़ी को भी आपको वो उतारना पड़ेगा, और सर्दी, एंड आई रिमेंबर इट यूज टू गेट विद द विंड चिल फैक्टर -20 -30 होता था, तो आप क्लास में जा रहे हैं तो आपकी वो आंखें भी बर्फ हो रही हैं। इंडियाना किस साइड के ऊपर है? ये ईस्ट कोस्ट में है, मतलब इट्स नेक्स्ट टू मिशिगन, सो राइट एट द बॉर्डर ऑफ कनाडा, ये सब स्टेट्स उधर ही। तो फिर किसी दोस्त से बात हुई, उन्होंने कहा यार ह्यूस्टन आ जाओ। उन्होंने कहा जी ठंड से मर जाओगे, ह्यूस्टन आ जाओ। सो मूव टू यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन आफ्टर दैट, एंड एक्चुअली डिड माई अंडरग्रेड फ्रॉम देयर। वहाँ पे सारा कुछ अर्सा रहे वगैरह, वो सारा कुछ किया, कुछ एंड देन डिड माई, एंड आफ्टर द अंडरग्रेड वाज ग्रेट डिग्री, बहुत कुछ सीखा, सब कुछ किया, एंड देन आई स्टार्टेड seeing कि अब आगे क्या करना है। So 4 years was lot of fun, 3.5 to 4 years काम किया। So straight out of college, what did you decide to do? And उस वक्त आपने ये सोचा हुआ था कि मैंने US में ही रहना है? अच्छा, कुछ नहीं सोचा हुआ था। मज़े की तो बड़ी बात ये थी ना, क्योंकि हम तो स्ट्रगल करके पहुँचे हुए थे ना, तभी तो पता ही नहीं था क्या होना है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री, इतने कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं थे, तो GPA भी 3.0 आया। I still show my marks to my children. They think ऐसे ही है, father is just normal. तो उस वक्त ये हुआ कि I got involved with the international students organization a lot. Right. Like a Pakistan Student Association? No, international student. There was not enough Pakistanis there, so वैसा नहीं हो सकता। And in the university there was a multicultural center. So देखें, from a middle class family, limited funds, so I had to work, knew that. So पहली जॉब यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में की, ठीक है, तो जहाँ पे खाते थे वहीं पे फिर बर्तन धोए, वो सब कुछ, ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो वर्कड ऑफ कैंपस, उस वक्त अलाउड था, कुछ 20 आवर्स आप ऑफ कैंपस काम कर सकते हो। जिस आरबीज में रात गुजारी थी वहीं पे भी पहली जॉब की, क्योंकि उस औरत को मेरी शक्ल याद थी, एंड शी सेड कि यार ये बेचारा है। सो मेड बर्गर्स, मैकडॉनल्ड्स की ब्रेकफास्ट शिफ्ट की। मैकडॉनल्ड्स की ब्रेकफास्ट शिफ्ट में कमाल ही होता है कि वो खुलता 5 पे, आपको पहुंचना 4 बजे होता है, ग्रिल पे काम। सो 4 से 10-11 किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी होती थी। सो इन द सेंस आई स्टार्टेड फंडिंग माई सेल्फ। सो पेरेंट्स गिव मनी फॉर a year or so, but then I started funding myself. Entirely education plus logistics की help आ जाती थी, but थोड़ा बहुत फंडिंग अपनी तरफ से अच्छी भली होना शुरू हो गई। तो फिर गैस स्टेशंस पे काम करना, वो सब नॉर्मल रहा। बट समझ ही आई कि यार कोई स्कॉलरशिप चाहिए, पढ़ाई पे तो मिलनी नहीं। लेट्स बी जस्ट मिलेगी, लेकिन उतने ब्राइट नहीं है, स्पोर्ट्स ही थे नहीं बहुत ज़्यादा। सो आई फाउंड दिस काइंड ऑफ अ नीश, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कल्चरल प्रोग्राम्स, पाकिस्तान की कोई वीडियोज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देयर वाज अ मल्टीकल्चरल सेंटर एट द यूनिवर्सिटी। सो I remember there was a Mexican American who used to head it. उससे बातचीत थी, तो उसने कहा तुम इधर भी 20 घंटे जॉब कर लो, ठीक है, फाइन कर लो। बट देन थ्रू दैट मल्टीकल्चरल सेंटर आई गॉट वेरी इन्वॉल्व विद दिस इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अब बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर इसका प्रेसिडेंट बन गया ना, तो उसके प्रेसिडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती थी। राइट। मतलब इट इज़ लाइक स्टूडेंट यूनियन बट इन अ वेरी नाइस एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। तो उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कैनवसिंग भी करनी है, वो इलेक्शन होते थे, रिलेशनशिप बनाना है। तो इन द लास्ट ईयर ऑफ माई डिग्री आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उससे फ़ायदा ये हुआ, एंड आई स्टेड द प्रेसिडेंट 3 years। अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज वेल? हाँ, 2 साल। उसकी फ़ायदा ये हुआ कि मेरी जो फीस थी ना, वो इन स्टेट हो गई। अच्छा। अब स्टेट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यू पेइंग अबाउट 5 times टू अ normal
अमेरिकन स्टूडेंट इनसाइड, जो यूके में भी ये होता है, यूएस में भी यही होता है. इट वाज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, so उससे फ़ायदा हुआ इन स्टेट यूनिवर्सिटी में जो पूरे सेमेस्टर की फ़ीस थी वो $1,000 रह गई. अच्छा. $1,000-1,200. हाँ. तो इट वाज बेटर देन अ स्कॉलरशिप, राइट. बिकॉज इट वाज नॉट मनी. 1,000-1,200 तो आप किसी ना किसी तरह बना सकते हैं. सो उससे ये डिसाइड किया कि यार साथ ही MBA कर लेते हैं. So I didn't do a master's in computer science. I was very much intrigued with this business and technology का जो intersection है. तो I did an MBA in management information system. MIS भी वहाँ नया था. Right. So किसी ने ये बताया their student council कि यार पूरा computer science से ना हट जाओ. You know, make it a combination. So I did an MBA in information systems because of that scholarship. और कोई रीज़न नहीं था, मतलब कोई पता नहीं था. अब तो कहते हैं यार बैचलर्स करो, फिर 2 साल की जॉब करो, फिर स्पेशलाइजेशन सोच के. यहाँ तो मतलब दैट वाज अ reality check. Parents could afford it, but I said कहाँ वापस जाऊँ, फिर मांगूँ, you know, let's just do it while I can. They gave me a lot of support, maximum, but then I said let me do. मास्टर्स में मैंने क्या किया कि आई डिड माई GMAT एंड ऑल ऑफ दैट, गॉट इन सेम यूनिवर्सिटी, MBA मिल गया. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मैंने MBA में दाखिला ले लिया. 1.5 साल में मैंने करना था, सोचा हुआ था समर सेमेस्टर्स लेके. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ वर्क एट द मल्टी, बिकॉज आई वाज इन नीड. मेरे पास स्कॉलरशिप थी, ISO का प्रेजिडेंट भी मैं था, तो उनके प्लस आई नीडेड टू मेक मोर मनी. सो there was a 7-Eleven. 7-Eleven is a grocery plus petrol pump chain in Houston. Right. And देसी ओनर था उसका. तो उसने, मैंने कहा यार मैं वीकडे में तो कर नहीं सकता. हाँ. उसने करने भी मैंने कुछ आवर्स है मुझे पैसे. उसने कहा ठीक है तुम इस तरह करो, सैटरडे संडे को डबल शिफ्ट कर लिया करो. राइट. और एक शिफ्ट कितनी लंबी है? 8 घंटे की. ठीक है. तो सैटरडे सुबह जाते थे, रात को आते थे, संडे सुबह जाते थे. बट वो 1.5 साल वो किया, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि आई वॉज एबल टू मोस्ट ऑफ इट फंड माई एजुकेशन 20 घंटे ऑन कैंपस. सो सारा टाइम ईदर आई वॉज ऑन कैंपस और आई वॉज वीकेंड डूइंग दैट. सो इट वॉज अ वेरी गुड टाइम एंड उससे सीखा ये कि कुड डू एनी थिंग. मॉपिंग द बाथरूम्स टू कोई काम वो नहीं है, बुरा नहीं है, मतलब काम है, काम है, वो करते रहे. सो आई थिंक दैट बिकेम अ वेरी बिग कॉर्नरस्टोन. From the family background to the education to my parents to my whole family, right, to this is what has shaped a big part of who you are. Big today. Part of who I am. So graduating MBA in 97, right? And now you're finally beginning to enter your professional life. More like a professional life in a sense. आप 7-Elevens भी कर रहे थे, वो सारे कर रहे थे, but now you had to like full time आपने dedicated job करनी है. Did you jump into the IT sector फिर? 97 में तो I feel like boom भी आ रहा था. You know, BPO move कर रहा है India. There's a lot happening all over the world. And so what was the environment like and what did you choose? So my parents came to my graduation. This was April, May of 97. Right. MBA में मेहनत बहुत की, तो ग्रेजुएशन बहुत अच्छी हो गई. Right. 3.9 GPA भी आ गया. And I was the one who went up on the stage and declared valedictorian और वो सब कुछ, वो वीडियो वगैरह सब सोचा कि यार क्या भेजा था, क्या बन के आ गया. So they were very proud. They came and my mother had visited me a few times, but my father came the first time to Texas. And Texas is a very good state. वो पाकिस्तानी है basically. मतलब देसी की तरह सारा काम चलता है. So there was a conversation कि आप क्या करोगे. कहा जॉब शॉप करते, कहा वापस आ जाओ. ठीक है, क्या गए वो. सो दे लेफ्ट एंड देन समथिंग आई डोंट रिमेंबर एन इवेंट, बट आई सेड कि यार छोड़ो यार पाकिस्तान चलता है. नाउ पीपल सेड कि यार अभी यहाँ बूम आया हुआ है, मतलब दिस इज बिफोर 9/11, राइट, यू नो, IT बूम, Y2K आ रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो इन June 97 आई पैक्ड अप विदाउट अ ग्रीन कार्ड, विदाउट ऑल ऑफ दैट, एंड मूव टू लाहौर. नाउ people still ask me, or I also think why it happened. I have no idea why. It just happened. तो गाड़ी थी, वो बेची, ये किया, वो किया, और पैकअप करके लाहौर आ गए. अच्छा. And parents were happy, family was happy, but वो सब परेशान थे कि करेगा क्या. हाँ, because वहाँ, I mean, this is interesting because
वहाँ पर बूम आया हुआ है और यहाँ कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ज़ीरो है, हाँ। तो अप्लाई करना शुरू कर, पता ही चला कि यार जॉब करनी पड़ेगी तो कराची जाना पड़ेगा। बैंक्स में है आईटी सेक्टर, टेलकोज अभी बने नहीं, पीटीसीएल के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई टेलको थी नहीं। गवर्नमेंट में जो, और फिर ग्रुप्स हैं, पैकेजेस है, ये वो, लाहौर में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। सो माई मामू वॉज इन शेल एंड ही वॉज विद, जून में मैं आ गया, अब अगस्त हो गया, अभी तक नौकरी नहीं मिली। अब सब परेशान हैं कि यार ये पहुंच गया वापस, अब ये इसके पास जॉब नहीं है, वापस फिर भाग जाएगा, फिर तो आएगा ही नहीं वापस कभी। सो ही केम, इनका यार एक कंपनी यहाँ पे अबैकस, राइट, यू नो इट स्टिल एग्जिस्ट, अबैकस कूपर्स एंड लाइब्रेंड के नाम से थी। हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है एज शेल सम आउटसोर्सिंग। मैं इस तरह करता हूँ कि ना तुम्हारा CV अपना कार्ड लगा के उधर दे देता हूँ, बट दैट्स ऑल आई एम गोना डू। राइट, अच्छा, माई मॉम वेंट एंड ड्रॉप्ड द CV. I get a call next day or 2 days after saying कि अच्छा आपका CV मिला है, इनका कार्ड सलीम पराज साहब का लगा हुआ है ऊपर, we know him, why don't you come for an interview? This is August of 97. Right. Went there, did an interview, and Abacus was a consulting company, IT का काम कर रहे थे and all of that. At that time, very and few. This was a Pakistani company or like an MNC? जी अभी भी है. They had a collaboration with Coopers and Lybrand, so right. Abacus, Coopers and Lybrand की वो थी, and so did my interviews and got through. Right. And started working there in September 1997. That was my start. Achha, during my MBA, I also did an evening job with, I forgot to mention that, with Pennzoil. Pennzoil Houston में oil and gas की कंपनी है, तो बिजी इसलिए थे कि 20 घंटे, मल्टीकल्चर में कहते थे, इवनिंग MBA था, डे में थोड़ा वो भी जॉब करते थे, वीकेंड पे वो करते थे, करते कराते काम हो गया सारा का सारा। My God. So it was a 1.5 साल बहुत कम सोए, लेकिन But exciting. बट स्टडीज खत्म हो गई। सोचा कि PhD करेंगे, बट वो कभी हुआ नहीं, बट वो कर लिया। सो इट वाज द MBA प्रोग्राम मैंने इवनिंग में फिर शिफ्ट कर लिया। डे में पेंजॉयल जाता था, मल्टीकल्चर सेंटर था, और इवनिंग में वो, तो उससे काम अच्छा चल जाता था। एंड आई वाज, देयर इज अ ऑयल चेंज स्टोर ओवर देयर कॉल्ड जिफी लूब, नाम सुना होगा आपने। तो उनके लिए MIS की रिपोर्टिंग वगैरह करना, तो IT से ज़रा लगाव था, तो वो काम और समझ, मतलब वो आपका एक्चुअल समझ आ गया कि अच्छा जी ऑन ग्राउंड जो काम होगा वो कैसे इंडस्ट्री में कैसा होगा। फिर अबैकस स्टार्ट किया। किस किस्म का काम था यहाँ पाकिस्तान में? अबैकस के पास एक ERP सिस्टम था, उसको नाम अबैकस स्वीट था उसका, उसको बजारमेंट के साथ में। तो ERP फॉक्स प्रो में बना हुआ था। जो उस ज़माने में आपके पास Oracle SAP वगैरह नहीं इतने होते थे, तो आप वो करते थे, आपने फॉक्स प्रो में कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम आए हो, तुम्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों आती है, तुमने MBA किया, इसको समझो। राइट। तो पहले 2-3 महीने उसको समझा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की। अब उन्होंने कहा यार अब तुम इसको इम्प्लीमेंट करने लगे। सो फॉर द फर्स्ट 18 months आई प्रॉब्ली इम्प्लीमेंटेड 30 to 40 ऑर्गेनाइजेशंस में। उस टीम थी उसके साथ। बट आई मीन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा वहाँ उस टाइम पे वो टेक्सटाइल्स में, देयर वाज नो लिमिट टू इट ना, कि मतलब अच्छा इस टेक्सटाइल में कर लो, फिर एयरलाइन में एरो एशिया में कर लिया, जॉनसन एंड जॉनसन में कर लिया, फार्मास्यूटिकल्स में कर लिया। सो वी वर सेलिंग, इट वाज एसेंशियली जितना भी 100,000 to 500,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होती थी, और उसको करके पेरोल और जनरल लेजर, और उससे बहुत सीखा, उससे समझ आया कि बिजनेस चलता कैसे। राइट। And that was a very good, again the second good base, a great company, still exists. So got a lot of experience from that. Did a lot of implementation, business को समझा, technology तो आती थी, business समझने में आया, and I did about 30 to 40 implementations. Since Abacus had this relationship with Coopers and Lybrand, in 97, Coopers and Lybrand got bought by a company called Pricewaterhouse. Right. So it became PricewaterhouseCoopers. So PricewaterhouseCoopers को Ferguson represent करता था पाकिस्तान में, but उसकी जो consulting थी वो Abacus के पास थी. So it was a audit versus consulting. Right. So Abacus became PricewaterhouseCoopers PwC. और उस वक्त क्या हुआ कि 99 में there was a project in Saudi Arabia with STC, and they were recruiting. PwC UK had that project, and they were recruiting from Pakistan as well, because it was a sister company. Right. Meanwhile, I was doing many projects, वो implementation चल रही थी, तो वहाँ पे एक ERP STC में Oracle का लग रहा था. So the partner came to Pakistan, he interviewed, and he selected 4 or 5 of us and कहा कि चलो Saudi Arabia आ जाओ. So
that's how the next phase of the journey starts, which gets me in touch with Middle East. It's all happening, leaving the US, coming to Pakistan, and no idea now. So essentially, the world is taking you wherever you're going. I've been, alhamdulillah, very lucky, very lucky that I've been moved around, like picked and moved around. Right. So a lot of prayers of elders are with me, picked around and moved. And so Abacus से आप direct चले गए PwC? नहीं, Abacus का ये था, PwC नहीं, वहाँ पे सिर्फ project पे चले गए. Project पे चले गए, ठीक है. इस दौरान parents said अब आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया तो शादी करो. That's also an important part of life. So again, arranged marriage. So I got, while I was going to Saudi Arabia, right before that I got engaged. Right before that. But at that time I wasn't sure I was going to Saudi Arabia or not. So got engaged in April of 99. Right. Okay. Actually, June of 99 is where the engagement happened. And my Saudi thing started in July. Right. So engagement हो गई, they said कि अच्छा लड़का लाहौर में यहाँ जी यहीं पे है सारा कुछ है. महीने बाद निकला. So my mother said कि ये तो न्यूज़ तुम्हें खुद ही जाके ब्रेक करनी पड़ेगी. We are not saying, because they'll think we have, not been forthcoming. So went and told that story to my to-be father-in-law at that time, and it was not the best of the responses because Saudi का visa भी मुश्किल था. We are in that time where visas were not that simple to get. So कि यार मतलब पता नहीं तुम फिर वो family यहीं पे होगी, तुम उधर हो गए और सारा कुछ and all of that. So anyway, somehow managed that. And then went to Riyadh. Achha. How long were you there for? Riyadh, I was there for about 18 months. Right. And this was July of 99. Right. Uske baad फिर were you moving around essentially? No, I stayed in Riyadh for about 8 months. And then because we were contracted through PwC UK. Okay, Riyadh is a city where gore zyada rehna nahi chahte the. So it was a very interesting project. It was 3 weeks on, 1 week off. Achha. So 3 weeks on means 7 days off? No, 5 days. वो अंग्रेजों ने अपनी बड़ी सही 1 week remote था. So remote का तो concept ही नहीं था, but off ही होता था कि phone पे. Yeah, there was no Zoom and all of that to do that. This is your work that you did essentially. So 3 हफ्ते के लिए गया और 1 हफ्ते वापस आ गया मैं. So went and visited my in-laws at that time. They were shocked to see me because I just went. Yeah. And then they realized, yaar, ye kya job hai? So I got married in October of 99. Achha. And my wife joined me right after that. So we stayed in Riyadh for another year after that. Right. So after that, from there, PwC के एक और project आया Dubai में. 2001 में I moved to... no, in the middle, sorry, I'm forgetting. I also had an opportunity to go to Jordan. Achha. So another PwC project, Aramax की एक B2B space थी Aragon के नाम से. Right. So took my wife and I had a son. My first son was born at that time. It was like few months, and we spent about 4 or 5 months in Jordan. And then it's the first time I'm hearing someone who's been to Jordan. How was Amman that? was brilliant. I remember we landed in March, April. Didn't realize Riyadh से सीधा उधर चले गए. It was going to be so cold. It's a beautiful city. It's a beautiful city. The Dead Sea right next to you, the Red Sea, and then the Petra and all of that. Stayed about 4 months there. And from there came to Dubai. Right. Now 2001 9/11 भी हुआ है. 9/11 उसके बाद हुआ. .com bubble भी फटा है उसी साल में. तो आपको वो चीज़ें impact की हैं? इतनी junior person starting not impacted much. PwC a global company. Absorb उन्होंने कर लिया. At that time जो boom आ रहा था ना वो ये e-commerce और B2B और G2G और Pets.com और government भी कर रही थी. So Dubai had announced a program of e-government at that time. Dubai being Sheikh Mohammed being ahead of everybody else. So that's the program we went to and worked with Dubai municipality. And that's the first 5 years that I spent in Dubai. In Dubai. That was my first stint. I've had 2 stints in Dubai and we'll talk about it. Right. That was the first. At that time, I was more of a developer, a system analyst. During that time became a team leader and then I became eventually the project manager for that account. Right. You eventually moved to IBM. Yeah. And so IBM bought PwC in 2002. Achha. So that's how we ended up. You didn't sort of make that switch. It just again was made for you. Yeah. So 2003 we became IBM. I became IBM and
that's how we became IBM. You know, nothing there. So always wanted to be in a large organization. PwC is a very large organization, and then came to IBM. तो मतलब would have been a global footprint. बिल्कुल, unparalleled. Right? Unparalleled. And I was in Dubai till 2005. Again, doing well. कोई मसला नहीं है. फिर कोई, you know, I had my second son in 2005. So फिर ख्याल आया कि यार अब क्या करें, चलो वापस पाकिस्तान चलते हैं. Again, family has always been a link to come back. I've always come back for family. Right. IBM से बात की, IBM Pakistan से, because I've been Dubai employee, doing well, government के contracts थे, मतलब lot of public sector work, lot of e-government work, good team, good friends, good. So I said कि नहीं यार family के लिए दोबारा, मतलब let's just, IBM ने कहा लाहौर में तो presence ही नहीं है, कराची आ जाओ, इस्लामाबाद आ जाओ. So I ended up in Islamabad. Achha. This is June of 2005. Right. So about 4-5 years in Dubai, back, and IBM had a consulting division, GBS, Global Business Services, उसमें काम शुरू किया, and started doing some work, and I was moved into Margala Towers in June of 2005. Moved into Margala Towers. So I just have so I live in the same sector, right? So I'm very close. मैं अपने high school में वो टूटे हुए towers पे जाता था. So we very well connected. Oh so, wow. Last tower के third floor पे apartment rent कर लिया. अच्छा. Last tower, so is that the tower that fell? Yeah, fell. Okay. नहीं ये नहीं फेल किया था. ये फोर्थ, ये आखिरी वाला जो मरगला हिल्स को फेस कर. राइट. ये वो था जो कि हाँ सही है, समझ गया. ठीक है. तो रेंट कर लिया. ऑफ कोर्स केम फ्रॉम दुबई, सामान वगैरह सारा, यू नो, सब आया. 20 फीट कंटेनर आया, पहुंचा उधर, एंड मूव्ड इन. राइट. नाइसली. जुलाई में मूव इन कर लिया, एंड समर हॉलीडेज़ ख़त्म हुई, बड़े बेटे को स्कूल में डाल दिया उधर बीकन हाउस में. एंड इस्लामाबाद ऑफिस हमारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर होता था, नियर द इजिप्शियन एम्बेसी. एंड IBM डूइंग, स्टार्टेड वर्किंग, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए OGDCL के साथ, NTC के साथ. And the reason I selected Islamabad over Karachi was that every weekend we would go to Lahore. Right. And obviously जब बाहर से आते हैं हम तो थोड़ा इस्लामाबाद जो है ना वो थोड़ा सा आपके लिए easier. मेरे लिए तो लाहौर ऑप्शन थी, but because there was no option, तो इस्लामाबाद थी. तो हम फ्राइडे शाम को 8 बजे बच्चों को गाड़ी में डालते थे और लाहौर आ जाते थे. और कभी मंडे उनको छुट्टी कराते थे. मैं भी लाहौर ऑफिस से काम कर लेता था, छोटा सा था यहाँ पे. कभी संडे नाइट, कभी मंडे इवनिंग. आई थिंक आई स्टेड इन इस्लामाबाद, आई थिंक 3 years. उसमें से 6-7 वीकेंड्स होंगे जो हम लाहौर नहीं आए. वहाँ के हर वक्त. सो नो सोशल लाइफ इन इस्लामाबाद, इट्स प्योर वर्क. बच्चे स्कूल, मैं ऑफिस, नथिंग, कोई ज़्यादा नहीं, बस लाहौर आ गए. और दैट वाज द होल लाइफ फ्रॉम 2005 टिल अबाउट एंड ऑफ 2007. And then came this October incident. Were you in the building? So small story on that. So Ramzan tha. Ramzan tha, and not feeling well that Friday. It came on a Saturday morning, October 8th, Saturday morning. I said, I told my wife, let's go, you know, go next day. And my sister had kept an iftar. Right. She said कि अभी चलते हैं, पैराडॉल खाएं और निकलते हैं. सुबह लेट उठेंगे बच्चे, it'll be a problem. So left at 8 p.m. that night. Not there on Friday. On Friday came to Lahore. Sleeping in Lahore, suddenly Lahore में भी झटका आया था. अच्छा भला आया था. Started getting the calls, तुम लोग कहाँ हो. उस वक्त नहीं पता चला क्या हुआ. टीवी में आ रहा था कि एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स गिर गया. In about an hour's time I get a call from one of the kind of residents or security whatever saying कि यार आपका तो टावर गिर गया. Shocked. और उस वक्त फिर मरगला की तस्वीरें आना शुरू हुई. So very, अल्लाह ताला ने बहुत उस वक्त बेहतरी की कि we were not there. Our tower did not fall. When were you able to move the stuff out eventually? Yeah, about 2 months later वो सब कुछ हो गया था. Throughout this, you know, started thinking that Dubai se वापस आए हैं, you know, all of that. But my wife has been a great support during this time. You know, she married the consultant. So moving around. And that's a difficult life. Yeah, moving around, you know, from Lahore to Riyadh to Jordan to Dubai, then to Islamabad. And she's been a great support all the way. And you know, understanding that as a consultant, you're doing projects, correct? So you can be anywhere. So जहाँ भी, but she said कि नहीं अब आ गए हैं, अब रहते हैं, कोई मसला. फिर I9 में एक घर रेंट कर लिया. Kind of stayed for about 2.5 years. But that was an impact
Yeah, big impact. obviously बात है कि वो उस पे पड़ा. और and then IBM थोड़ा अच्छा हो गया. I started leading GBS. मैंने फिर अपने कंट्री जनरल मैनेजर हमारे हमायूं बशीर थे, उनको कहा कि you know what, इस तरह करते हैं कि why don't you move me to Lahore? It doesn't matter where I am. You're getting your work done. So why not? And Lahore didn't have any presence at all? बहुत छोटा ऑफिस था. मैंने कहा चलें, now that you've get it started. तो 2007 में वापस लाहौर आ गए. Right. Started IBM was doing very well. So I built the IBM Global Delivery Center here, right, which is one of the big things that I did. It still exists. Right. It's about 500 people. When I joined IBM Consulting, it was 11 people. Acha. 11 log ki team. And so the GDC essentially is dealing with all the projects all over the world. All over the world. Whether they are offshore or whether consultants are flying out. It's like Teradata GTC. Same है. यहाँ पे इसको हम BGDC कहते थे, अब CIC कहते हैं. Right. So Islamabad में उसकी बुनियाद रखी. Hired the first 200, 300, 400. First 50 people I interviewed everybody myself. Great team, really enjoyed it. Diplomatic enclave के अंदर होते थे. Visas walk करके मिल जाते थे. Swiss embassy चले जाते. But then we moved out into F11. Some very good clients. Jazz हमारा client बन गया. Civil aviation थी. Shell था. Askari Bank. PTCL. Lot of clients that came through. And 2007 में फिर मैं लाहौर मूव हो गया. Continued that journey. Used to travel a lot to Lahore and Karachi. Essentially, what were you guys doing? Was it data management? Was it MIS? Was it cloud? तो खैर उस टाइम पे नहीं, इतना नहीं था. होगा. हमारा ज़्यादा काम जो था ना वो systems integration का था. In the sense कि ERP implement हो रहे थे, कुछ development का काम हो रहा होता था, Java का काम हो रहा है, .NET का काम हो रहा है, Microsoft Technologies में, Oracle ERP, SAP की टीम बहुत बड़ी बना ली थी. So CRM, Siebel, जो भी consulting or systems integration में होता है. And that team became about 500 people team in 3 years. We had great growth. Absolutely amazing. And this became a recognized center for IBM. Right. And during that time, I kept growing within the company. Again, right person at the right time. Yeah. चलता रहा. So, children going to school, perfect हो गया. लाहौर में बैठे हुए हैं, you know, grandparents का भी, रिश्तेदारों से भी मिल रहे हैं. So, you know, all of that. Doing well, and then in 2010, my boss, who was with me for a long time in Dubai, Sriram, an Indian guy, and he said, "Ke yaar, ab to you've grown, like you've outgrown a lot also. Why don't you come back to Dubai?" And yaar, आराम से बैठे हैं लाहौर में, everything is good, सब अच्छा है. उसने कहा नहीं. मैंने कहा फिर छोड़ना पड़ेगा IBM. So I started interviewing, and then he's been a great mentor. I've had a lot of luck. My original boss Nishat Kazmi, who stayed with IBM a long time, great mentor. Hamayun Bashir, a great mentor, and then Sriram Viswanathan, who now leads IBM UK. He's a CEO there. All mentors. He somehow convinced me, my wife, and everybody saying, "Isko wapas bulao." He'll become a partner in IBM, which was a very big deal, right, at that time. So 2010 July made you're back in Dubai. Nothing I did. Two children. The first one about 10 years, the second one about 5 years. School में डाला उठे और वापस दुबई चले गए. So that's how. And what was the position there? So I became the Middle East and Saudi and Pakistan country leader for GBS, which is the consulting division. Okay. IBM was so suddenly you're looking at, instead of one market, you're looking at multiple markets. Multiple markets, a team of about 200 people, a good couple of $100 million of revenue. Really, you know. And then during this time, became an executive in IBM. I became a partner there in 2010. Right. I think early 11, I became a partner. And essentially, what you were doing there was the sales side of things, or sales and implementation, both. Okay. Both. So in the consulting, there is no sales separate. You have to do the whole 9 yards. It's the only field where you have to walk the talk. Ab pre-sales and sales and pre-sales, सारा कुछ सारी team के साथ करना and all of that. So did that again. My mentors, very kind, Sriram and others, they said, okay, now that you've done it for 2 years, now why don't you run operations for us? So became COO for Middle East Africa. Right. So then started running operations for Middle East and Africa, all of it. Operations में पूरी delivery देखना, hiring, recruitment, client satisfaction. And this stayed for about 2-3 years. And then
they said Sriram was moving. So they said, why don't you now run the MIA region? I said, Interesting. oops. Did you ever imagine you'd be doing that? Did you ever I mean, again, so now I'm thinking about the kid who didn't get into UET. UET, and a kid which came from Lahore and did very little. Going and running a full region for IBM, $500 million region of Middle East and Africa, never thought of. As I said, I've had so many prayers, so many mentorship, been at the right, and I never strived for it. मतलब ऐसा नहीं था कि यार ये करना है, ये बनना है. 20 घंटे लगाकर बस मैं यही करता हूँ. बस ये काम करते थे, मेहनत करते थे. Honest, वो सब चल रहा है. And ज़्यादा लाइक भी नहीं पाए थे. ये प्रूव हुआ है मेरी स्टडीज़ में कि नहीं है. तो जब नहीं है तो नहीं है, सही है, mediocre. And I have a theory on that as well. So 2015, I got offered as the general manager for Middle East and Africa. Right. And Turkey. Turkey was part of it. So Middle East Africa covers Pakistan down to whole of Middle East, Gulf, Levant, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, North, East, Central, and South Africa, including Egypt and Turkey. And that's huge. That's very big. We had 18 offices in this, but the countries are over 70. So got that in 2015, and IBM then promoted me to a vice president, which was a big deal. In IBM world, 450,000 people at that time. I think there were less than 2,000 vice presidents. So big deal again, very big. So now deal. I'm beginning to get very curious here. How did this system switch happen? Because you're now playing in the global league, and this is a very exciting hyper growth time for the global world. And so what's that decision process like? Okay, I'm going to I'm on a VP level in global values race. Probably मैं इधर भी अगर switch करूँ तो मैं बहुत सारी जगहों पे बहुत चीज़ें खेल सकता हूँ. So इस तरह हुआ ये कि I was part of the global management board of GPS. So there are 20 people in it, जिसमें Americas का head, Middle East Africa का head, Europe का head. So I'm part of the decision making of the global GBS, which is about 200,000 people. It's like Accenture. Right. And then I got also elected into the global transformation team of IBM, which is a team of 300 top IBMers who works on strategy initiatives of IBM, headed by the chairman herself. Right. So ऐसा नहीं था खाली मियाँ रन कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था. और ये वो वाला टाइम है मुझे याद है जिसमें I was at Teradata during this time 16-17 and ये transformation was everything at that time कि भाई दुनिया बदलने वाली है, डिजिटल आ रहा है and सब कुछ ब्लॉकचेन आ रहा है, IoT आ रहा है, डिजिटल आ रहा है. काम तो बहुत इंटरेस्टिंग था. लार्ज कॉन्ट्रैक्ट, वॉटसन आ रहा था आप लोगों का, वॉटसन चल रहा था और सब कुछ, तो बहुत मज़ा आ रहा था मतलब. एंड ऑफ कोर्स अगेन फैमिली चीज़ें. फादर स्टार्टेड गेटिंग इल इन 2015. मेरे साथ ही दुबई में होते थे पेरेंट्स, सो ही स्टार्टेड गेटिंग इल इन 2015. 16 में और हो रहे थे, 17 में ज़्यादा बीमार हो रहे थे. ही वाज इन हिज 80s एंड ऑल ऑफ दैट. सो मिड 2017 एक और ब्रेन वेव चली गया, अब वापस चलते हैं दोबारा. Father was getting ill. You don't know how long the life is. So very difficult to convince the family. Again, my wife, great support. Children, a great support in that. Because होता है कि जब आप इतने साल रह लेते हैं तो आप तो आना चाहते हैं, but the family doesn't want to come. Yeah, back. particularly the kids, right? Like they're into that culture. Into that culture. वही 9 साल हो गए थे. मतलब 2010 में क्या 17-18 आ गया था. Right. So IBM को कहा कि यार उन्होंने कहा यार क्या करो, तो इस तरह करो, ये वाला रोल लाहौर से कर लो. यार ये हो नहीं सकता. इट्स मिडल ईस्ट अफ्रीका. दुबई से तो ट्रैवल, मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड अ वीक एवरी क्वार्टर इन जोहान्सबर्ग. टर्की जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं. माय वाइफ सेड कि ये तुम्हें पे एक कर्स है कि तुम्हें हर हफ्ते जहाज़ में बैठना पड़ता है. दैट वाज द कर्स दैट आई हैड टू ट्रैवल. बट लाहौर से मुश्किल हो जाता है. लाहौर से पहले आपको दुबई जाना पड़ता है फिर, और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैंने कहा अनफेयर है. मैंने कहा अच्छा यार, आई सेड आई वोंट टेक अ लीव. मैंने कहा लीव ना लो, वी गिव यू अ ग्लोबल रोल. सो 1st January 2018, I landed back in Lahore, and I was the global sales leader for cloud application for them, looking after Europe and North America, working from Lahore, from my office, single man, the team in Dublin and in India. अच्छा. So interesting हो गया. फिर से interesting हो गया. और sales देखनी थी accounts में और sell करना था. That lasted short because उसमें थोड़ा travel था. Father was getting more ill, so I then kind of left IBM in September 2018. ठीक है.
With a job in hand, or no, we'll figure it out. We'll figure it out. Because father, IBM would take me back, but father was getting ill. My father unfortunately passed away in October 2018. Right. And it was a very short period from when I left and all that. During this time, I said, "Kya kare, apna kaam karte hain." So McKinsey थी ना, तो अपने ज़हन में single man consultant बन जाते हैं. So systems approached me. Asif Peer and Azaz, hum Middle East mein grow kar rahe hain, why don't you become a consultant with us? Right. That's how the systems journey begins. This is September 2018. Right. So I joined them after my father passed away somewhere in November as a part-time consultant. And consulting? Just on growth. Okay. Because I have a lot of experience in the Middle East. So essentially consulting with the organization, not as a consultant of the organization. Yeah, consulting with this. So my own company, I established a company called Growth Mindset Consulting, because growth mindset has been a big anchor all my life, that think big, do big. And I had then a couple of other clients that came through. Right. So during this time, did part-time consulting here, did a couple of other clients, and then started full-time with systems in 2020. They've been very kind, and they said, why don't you come and do a COO role? So that's how the journey into systems started. Left IBM and did my own thing. Right. And then went in. We're at the 51-minute mark. We're 11 minutes over time in terms of this conversation. But quickly, what I'd like to know is, what all are you looking at in systems? And how do you see the company in terms of, अगर मैं आपसे पूछूं आज as of today, how do you see the company in terms of, you've had a global experience, not just any global experience, you've had a global experience of one of the largest, essentially, definitely IT conglomerates. For a lot of people जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक नहीं है, उनको शायद कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, बट ये एक बड़ा मगरमच्छ है IBM, राइट? एंड सो उससे आकर सिस्टम्स को देखकर आपको क्या, व्हाट आर यू सीइंग हियर? सो I look after the delivery for systems. So all the delivery, all the talent that we have reports into my organization. Right. Correct? So what do? We are project focused, we are client focused, we deliver projects. So the whole organization from a delivery perspective reports into me. So what is the difference, correct? When I started with systems, we were seeing a boom coming, पिछले 3 साल में ही सारा बहुत बड़ा boom. This is the post free float dollar, very pro export regime. Exactly. And the reason I joined them is this group has a great vision. They are a hungry group. Right. They have a growth mindset, but they're hungry as well. We are not getting satisfied with what we are, and that was a very intriguing factor. And Azaz Hasan, the chairman, Arshad Masood, the group CEO, Asif P, they're all very positive towards growth. They're very positive towards investment. And bringing somebody like me and convincing me and then having me over has been a great opportunity for me, but they saw the vision in that as well. And I think that made a lot of sense for everybody for me to be here, because I had seen scale. Yeah. So my next question was going to be about processes. Yeah. Because one of the major problems that happens is you have these sort of global companies like Teradata and IBM, and I think one of the biggest उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो प्रोसेसेस है. टैलेंट आप कहीं से उठा के कहीं भी डाल सकते हैं, और पाकिस्तानी मार्केट में तो टैलेंट जस्ट सॉर्ट ऑफ मूव्स अराउंड लाइक एन ओपन सी, राइट? Pakistani companies more often than not lack those processes that are global in nature. And so how did you find those processes here, and how have you been improving them over time? So we have, ऐसा नहीं था यहाँ process नहीं थी, because we are a public listed company, so there are processes in there. What we were missing is a bit of implementation of those processes, correct? Right. It was not like IBM or Teradata, कि यार global process आ गई अब आपने करना है. Every process had to be implemented. So one of the things we did is we worked together with the teams here to get that implemented, no exceptions, right? हर चीज़ की अब एक हमारे पास clear policy and guideline है जो कि missing थी. क्या अभी मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो बिल्कुल सेठ कंपनी है ना, वो 0 to 20 पे ऑपरेट करती है, और जो IBM Teradata ऐसे पी हैं वो 60 to 80 पे ऑपरेट करती है, फ्रॉम अ प्रोसेस एंड कल्चर, बिकॉज प्रोसेसेस ड्राइव कल्चर. वी आर समवेयर इन द मिडल एट 40-50 ट्राइंग to get to that 60 to 80. So we are not a state company. We are a proper employee-owned public company, and that's what has helped us. So created more processes, really not
टू कीप अस एजाइल, टू कीप अस, बिकॉज एक नुकसान IBM और टेरेटर का था कि वो स्लो डाउन हो जाती है ना, राइट. हम स्लो डाउन नहीं होना चाहते थे. वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आर स्टिल ग्रोइंग एंड वी आर ग्रोइंग फास्ट इनफ एंड स्टेइंग निम्बल एंड एजाइल. सो हैड, बट इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत काम हुआ है. And in terms of footprint, 18 में आपने join किया, this is 2022 right now, it's almost 4 years now. How has the footprint of the company grown in terms of headcount or? So 1,000 लोग थे हम, about 1,000 people, 800 to 1,000 in professional services. Today we are 3,500 people. Acha. Correct. So the last 3 years has been every year doubling. So last year we doubled. And our overall headcount in Pakistan now is about 5,000 people. So we have a BPO division. So we are an IT services and BPO company. So we do a lot of systems integration. We are basically a problem solver. We solve engineering problems for our customers. Right. We do digital technology transformation for our customers. Our customers are in Pakistan, in Middle East, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, all of Europe, Germany, UK, and North America. And now we are expanding. We just opened Saudi Arabia. We're going to go into Africa. We are expanding into rest of Europe. We've opened up UK. So our customers are all over the world. We have hundreds of customers. So we are an engineering company. That's one part. So professional services, system integration, technology engineering. That's what we do. And the second part is we also do a BPO business, which is the business process outsourcing. 1,000 people here, a lot of people around the world. And we do that around insurance and mortgage. Right. That's your particular targeted So we have become from 1,000 IT consultants to about 3,500 right now. And the idea was to make this the next Accenture of Pakistan. Right. Next Wipro Tata of Pakistan. And that's what we are doing right now. So Wipro, Tata, Accenture, GBS is our model, correct? We want to be a systems integrator, but very engineering focused, very innovation focused. We have products, we have services. And the idea is, how do we have the first 25,000 people company in Pakistan, a tech company? Right. And that's the idea. And you think that growth is not just, it's आपने 2 साल grow किया, but you're saying 25,000 का vision है. ये growth अभी consistently continue करनी है हमने, inshallah. And the idea is, when we stand on a global stage, we can say, यार पाकिस्तान में भी एक टाटा, HCL, जो which companies हैं, Wipro, HCL, Infotech, टाटा वाली जो सारी जो सब companies हैं, Cognizant, पाकिस्तान में भी एक मौजूद है. ठीक है, पाकिस्तान में भी एक Accenture type की company बन सकती है. I think Systems is the only company that has the footprint and the muscle to be able to and has the vision. हमने बहुत सारी glass ceilings तोड़ी हैं, number of employees, stock market की price, stock valuation, the type of work we are doing. You know, we are a very, very engineering focused company, and that's the vision that we carry. The reason I am with Systems is because we want to be the 25,000 people. Right. And that's exciting. That's exciting to be a part of. That's very exciting. Challenges rahenge. There are so many. Supply is a huge challenge. We can talk more about this. So let's talk about the challenges now. And I again, we're at the 1 hour mark. So मैं अब थोड़ा सा side पे आऊँगा, macro पे लेकर जाऊँगा आपको, right? I think everybody agrees on a few things. Everybody agrees that IT is the future, or digital is the future for Pakistan. And everybody agrees that अगर मैं systems की बात करूँ, तो everybody is looking at systems. Because systems is going to lead the way. They're not going to be the only one. They're going to be at 25,000, and they're going. जब वो 25,000 जाएंगे, तो हमारे पास पूरा एक समुंदर होगा, बहुत सारे और उनका. मैं जिस तरह आजकल देख रहा हूँ, and every person from the IT industry I'm speaking to, मुझे तो सबसे बड़ा जो problem नजर आ रहा है वो supply side का है, right? कि getting business is not an issue. 5G आएगा, $1 trillion economy में वैसे ही add होगा, तो demand है, demand बनाने वाली बात है with people like you who have that global experience. Inshallah, getting the demand side fulfilled shouldn't be an issue in my understanding. But then आपके पास बंदा, कहते हैं ना कि 25,000 बंदा पाकिस्तान में ग्रेजुएट कर रहा है IT में, 5 to 8% उसमें से एम्प्लॉयबल है. आप निकाल लें, उसकी मैथ कर लें, तो मेरे ख्याल है 2-2,500 बंदा जो कि पूरी मार्केट ने एब्जॉर्ब करना है. 5,000 भी कर लें आप, बहुत पूरी मार्केट ने एब्जॉर्ब करना है, बहुत डिफिकल्ट है. एंड उसकी वजह से हमने देखा ओवर द पास्ट 3 years बंदा है वो हॉप अराउंड कर रहा है, वो इधर से आता है, वो एक प्रोजेक्ट आता नहीं है, वो मैनेजर्स कॉलेज मिला रहे होते हैं अपनी पुरानी कंपनी में कि यार तू फारिग है आजकल, तू ऐसा कर, डबल कर, तू जॉइनिंग बोनस ले, तू आके काम कर ले मेरे लिए. एंड दैट्स वो एक प्राइस वॉर है. दैट्स नॉट ए सस्टेनेबल इकोनॉमिक यूनिट. इकोनॉमिक नहीं है ना वो सस्टेनेबल. कोई भी कंपनी इस तरह काम नहीं कर सकती. कंप्लीटली एग्रीड. सो हाउ डू यू थिंक, बड़ा सिंपल मैं सवाल कर देता हूँ, सप्लाई साइड को आप किस तरह सॉल्व करते हैं? देखें, हमें इसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व नहीं करना. हम अब तक हमने क्या सोचा कि गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट
HEC डबल कर देगी ग्रेजुएट्स, ट्रिपल कर देगी और उसके बाद सारा मैजिक होगा और मसला हल हो जाएगा, हम AI भी प्रोड्यूस कर लेंगे। नहीं होएगा, ठीक है। लेट्स जस्ट चले 25,000 से हम 30 पे पहुंच जाएंगे, 35। तो ये तो हमें कहीं भी नहीं, ये तो ऑर्गेनिक है ना। वी एज IT कंपनीज हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दिस, ठीक है। आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, वो टैलेंट सही तरह क्यूरेट वो ग्रूम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि at a given point we have 400 to 500 people getting trained within the company, right? किस चीज़ पे ट्रेन हो रहे हैं? वो टूल्स पे भी ट्रेन हो रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे भी ट्रेन हो रहे हैं। सो वी ऑलमोस्ट हैव लाइक एन इंटरनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट इज रनिंग एंड वी हैव डेडिकेटेड सीनियर पीपल टू मेक दैट हैपन। विजन क्या है? हमें एक अकेडमी की तरफ जाना है या हमें एक पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है एज सिस्टम्स, राइट। हमारा विजन है कि हम एक सिस्टम्स इंजीनियरिंग अकेडमी बना लें। नाउ दैट अकेडमी इज HCL के पास भी है, विप्रो के पास भी है। वो क्या करेगी कि वो ये 6 महीने के इनपुट पे आप लैंग्वेज का बंदा उठा लें, आप फिलॉसफी का बंदा उठा लें, आप आर्ट्स का, उसका एक एंट्री टेस्ट लें, उसको देखेंगे वो किस, एक तो पहले बात है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, क्योंकि देखें लैंग्वेज तो बदलती रहेगी, टूल्स बदल। मैंने फॉक्स प्रो और कोबॉल में काम किया हुआ, अब तो पता नहीं कुबरनेटिक्स ये वो बहुत कुछ पाइथन एंड मीन मर्न जावा, पता नहीं क्या क्या चीज़ आ रही है। सो यू गेट दैट पर्सन एंड देन मेक श्योर, क्योंकि ब्रेन तो है ना उन लोगों के पास भी, तो एक तो ये चीज़ होनी है। एंड द मोर the tech companies take ownership of it along with government's help. I'm not saying that government is not going to help. They are helping. They have many programs. बहुत सारे programs में हम PSEP वगैरह के साथ। एक मसला ये ना कि गवर्नमेंट पूरी दुनिया में हमने ये देखा, इट्स नॉट जस्ट IT, गवर्नमेंट का काम नहीं है ये करना ही नहीं। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज बनाना, और वो बना रही है, वो उसको उसके हिसाब से कर रहे हैं। टेक्निकल काम कंपनी जो काम एक्चुअली कर रही है उसी को ही पता है कि किस तरह से करना है। एंड उसमें थोड़ा सा मैं सॉरी आपकी बात को करके थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करूँगा। देखें हमारे यहाँ ना एक दौड़ लगी हुई है स्किल्स के ऊपर, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर भी स्किल बेच रहा है, कह रहे स्किल खरीद लो, और उसकी वजह से आपके पास ये एक ह्यूज समंदर ऑफ फ्रीलांसर्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि स्किल्स घुमा रहे हैं। कंसल्टिंग सिर्फ स्किल पे नहीं चलती, कंसल्टिंग सॉफ्ट स्किल्स पे चलती है। कंसल्टिंग क्लाइंट की कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से 70% है। आप क्लाइंट को समझ जाएं, आपका आधा काम वहीं हो जाता है। कंसल्टिंग के अंदर आपको जाहिर है कि कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक लोन वुल्फ की तरह आप चलना शुरू हो जाएं, आप देखें जी आप किधर पहुंचते हैं। जो फ्रीलांसर्स हैं कि यार ठीक है मैं अपने कमरे में बैठ के पूरी रात गुजारी कर लूँगा, वो चीज़ जो है, डू यू थिंक कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एन एकेडमी मॉडल, how important do you think these aspects are as well? Because this is where you, again, global footprint पे जाना है, तो आपने उस इंसान को स्किल के साथ साथ एक ग्लोबल कंसल्टेंट भी बनाना है। मैं 2-3 चीज़ें में अब मैं फ्रीलांसर्स को एड्रेस कर लेता हूँ। अभी हमारी मार्केट फ्रीलांस की बूम कर रही है, ठीक है। वो एक जगह पे जाके रुक जानी है। इंडिया में भी ये हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये कई जगह बबल्स हैं, किस किस एरिया में वो बर्स्ट होने में। कोविड की हमने बात नहीं की, आई डोंट लाइक टॉक अबाउट कोविड अलॉट, बट कोविड ने सारी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दी है रिमोट वर्किंग की। तो इससे फ्रीलांस मार्केट में बहुत बूम आया, गुड फॉर पाकिस्तान, बट दैट्स नॉट एन इंस्टीट्यूशनलाइज मार्केट। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान देगी इवेंचुअली, लेकिन उसका एक स्केल रहेगा। अभी का स्केल रहेगा 10-20-30% बढ़ जाएगा, पर वो रुक जाएगा। सो दैट मार्केट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। वो इंडिया में भी गई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं गई है, लेकिन ये इसकी इस तरह की ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। सो दैट इसको तो हम एड्रेस कर लेना एक तरफ, बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो काम कंपनीज के पास आएगा ना, वो इंडिविजुअल्स के पास नहीं आएगा, वो भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जाने करेक्शन आनी है। देखें कोई भी इंडस्ट्री 200-300% पे ग्रो नहीं कर सकती। करेक्शन तो मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे भी आनी है। जो पैसा US यूरोप को दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, वो ख़त्म हो रहा है ना। मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कहा कि अब तुम जितना मर्जी इन्वेस्ट करो। सो योर सोल्यूशन इज दीज the tech organizations and the services organizations that you have in Pakistan to grow. Yes, freelance market will stay. Now, talent war, ये भी forever नहीं चल सकती। इकोनॉमिक्स नहीं काम कर सकते। लाख रुपए वाले बंदे को मैं 2 लाख पे हायर करता हूँ, अगला 4 को ले जाता है। That's not sustainable again. Yeah. So the model of this training academies is that you create not for just yourself, but you create for the market. For the market, yeah. अब इंडिया में HCL 18,000 बंदे या 12,000 बंदे, 10,000 से ऊपर बंदे वो ट्रेन करता है। हम भी ऐसे करें, आधे मेरे पास आएंगे, आधे मार्केट में जाएंगे। क्योंकि जब वो मार्केट के पास जाएंगे ना, तो मेरा बंदा प्रोटेक्टेड रहेगा। एग्जैक्टली, बंदा भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ये एकदम नहीं होगा, ये नेक्स्ट 3 to 4 years की जर्नी है। 3 to 4 years आप कह रहे हैं हो जाएगा, ये होएगा, आपको नजर आएगा। ये होते नंबर में कितना होगा वो नहीं हम बात कर सकते। अभी हम 3-3.5 बिलियन एक्सपोर्ट पे बैठे हैं ना। 1 बिलियन एक्सपोर्ट के लिए बंदों की बेस पे 25,000 बंदा काम पे होना चाहिए। ये सिंपल मैथ है।
You can do the math. I'm not going to comment on that. 25,000 की भी आपके पास ऐसा वो नहीं है। वो नहीं है, मैं कमेंट भी नहीं करूँगा ना। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होती जाएगी, लेकिन अगर आप 4-5 साल 3 से 5 साल ये सस्टेनेबल कर लें विथ पॉलिसीज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस। जो पॉइंट मैं एक और रेस करना चाहता हूँ, बिजनेस अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। कौन सा बड़ा बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट है जो कि IT में आया है? बहुत थोड़े। टाटा, इन्फोटेक, HL, ये तो सब बिजनेसेस के कन्वेंशनल बिजनेसेस ने अप्लाई किया। सो दैट्स अनदर थिंग वी हैव टू लुक एट, व्हाई आरंट द बिजनेसेस दे आर एंटरिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, दे आर एंटरिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दे आर एंटरिंग मेनी अदर मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे मतलब लुक एंड जो फील हो जाती हैं। व्हाई आर दे एंटरिंग सर्विसेज? सो दैट्स अनदर पॉइंट दैट हैज टू बी एड्रेस्ड, एंड आई वेलकम द बिजनेसेस, द लार्ज बिजनेस पीपल टू कम एंड इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट $115 बिलियन है, इंडिया की IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन है। मेरे आपके जहन में सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट इज द बिगेस्ट? नो, इंडिया इज IT, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है ना। 63% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर 30 राइट नाउ। सारे मतलब वी हैव एवरीथिंग लाइंड अप टू गेट देयर। व्हाट वी नीड टू डू इज द राइट इन्वेस्टमेंट, राइट अकेडमीज एंड ट्रेनिंग। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट एंड HEC सब कुछ चेंज करे, हमें पॉलिसीज बने। STCA इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, मेनी अदर इनिशिएटिव दैट द गवर्नमेंट्स आर डूइंग। Government needs to market us, give us this policy, and this industry has to run, and people have to invest in this industry, and that's the way out. We are very positive. There are challenges, but we have broken some of the glass ceiling. इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में कभी नहीं बनी, हमें उसको ऊपर लेके जाना है। फ्रीलांसिंग, टैलेंट वॉर एक हद तक चलेगी, बट इन द नेक्स्ट 12 to 18 months you'll see that slowing down, not decreasing, slowing down. टैलेंट को भी समझ आ जाएगी कि अब हम कन्वेंशनल बार-बार हॉबी तो नहीं कर सकते ना यार। अब हम कन्वेंशनल हो जाएंगे, क्योंकि कोविड खत्म हो गया ना, तो लोग अब ब्रेन ड्रेन ज़्यादा शुरू हो जाएगा। पहले तो ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा था ना, मैं दुबई भी नहीं जा रहा था, मैं यूरोप भी नहीं जा, अब वहाँ पे लोग जाना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। सो वील गेट टू अ प्री कोविड स्टेट ऑफ ब्रेन ड्रेन। हमारे इटरेशन रेट्स 20% से ऊपर हैं इस इंडस्ट्री के, वो भी कम हो जाएंगे। सब चैलेंजेस है। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट बिजनेस कम्युनिटी से, दे हैव टू इन्वेस्ट। देखें अभी यूक्रेन की अपॉर्चुनिटी, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी? यूक्रेन भी $3-4 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। उस वाइड कौन कवर करेगा? वो कहाँ जाएगा? पोलैंड, ब्रातिस्लावा, यहाँ वहाँ जाएगा, कुछ इंडिया जाएगा, कुछ हमारे पास भी आएगा। अभी नहीं आएगा, कुछ महीने लगेंगे, पहुंचेगा, क्योंकि लोग। So you have to be ahead of the curve. You have to be looking at where the money is. You have to. Yeah. The whole world is open. नॉर्थ अमेरिका की इतनी बड़ी मार्केट है, अफ्रीका की मार्केट है, यूरोप की है, एशिया पैसिफिक है। Why don't we? The problem we have, one of the big opportunities तो बहुत है। हम लोग ना बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अच्छा यार मैं $1 मिलियन प्रॉफिट बना रहा हूँ, काम चल रहा है, सुकून है, चिल करता हूँ। खानदान वालों के सामने तो सेठ तो बन गया, सेठ तो मैं बन गया, $1 मिलियन आ रहा है, ठीक है यार मेरे 300 बंदे काम करें। 300-3,000, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम्स। साहब की बात है ना, कितना हाउ हाई कैन यू इमेजिन और एंड यू हैव टू वॉक द टॉक। राइट। जो ये कंपनीज वो इन्वेस्ट नहीं कर रही। राइट। वेयर इज दिस इन्वेस्टमेंट इन स्टूडियोज? पूरे पाकिस्तान में हमने क्यों सिर्फ डिजिटल स्टूडियो बनाया, डिजिटल गैराज क्यों बनाया? व्हाई आर वी 3,500? बिकॉज देयर इज द विजन ऑफ द ग्रुप। राइट। And that's what I request that people bring to the table. Right. This is a longer term investment, but it pays off and it really helps the country. Employment create karna. And it's good middle class employment, right? So it's middle class. And with a huge social mobility. I mean, we look at your story. And it's huge, incredible. Yeah, you know? Huge social mobility. 5,000 people in Pakistan, a tech company, the highest exporter, stock market pe we are again 100 billion plus, several awards. It is possible. I was speaking to a CEO yesterday of another company, and they all are saying we're giving your stories as a company, right. Correct? But those stories have to be followed through. I predict in the next 2, 3, 5 years, you'll find many systems in this country, we just need government to continue with the policies. देखें क्या चीज़ चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए। इंडिया ने क्या किया है? फिलीपींस की कॉल सेंटर मार्केट $30 बिलियन की बन गई, क्या किया? कंसिस्टेंसी लेके आए। That's what we want. I am always a half glass full person because that growth mindset tells us we have to grow. We'll have difficult years, everybody will have, but ये
मोमेंटम चलता जाएगा. आई विल नॉट कमेंट ऑन द 50 बिलियन और द 100 बिलियन और अभी 3 से 3.5 बिलियन. मतलब you're just going to look at what's right in front of you, exactly, rather than just sort of नेक्स्ट मार्क हमें 5 बिलियन हिट करना है. ठीक है, अब 3 से 3.5 बिलियन किया, अब हम 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5 बिलियन करें, फिर वहाँ से ग्रोथ देखें, छोटे छोटे मार्कर्स बनाएं और ऊपर जाएं. यार 2 साल पहले हम 1 बिलियन कर रहे थे और उसका कोई नहीं सोचा था 3 बिलियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब 5 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, बट टाइम लगेगा, मोमेंटम होगा, पॉलिसीज चाहिए. लेट्स इनकरेज, लेट्स इन्वेस्ट विद दीज कंपनीज टू मेक दीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सप्लाई को ठीक. Makes sense. Asif bhai, 1 hour 15-minute mark. I really want to go longer, but we have another podcast waiting as well. Would love to have this conversation again, maybe in the future. एक सवाल मैं तमाम guests से पूछता हूँ, and I'd like to like your thoughts on this as well. You've been in the US for 7 years almost. You've been in Middle East here and there, Africa. Travel भी आपने बड़ा किया हुआ है, दुनिया भी बड़ी देखी हुई है. Somehow आपको पाकिस्तान चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कल्चर हो, हमेशा वापस खींच के ले आया. And now you're here, fully invested into this country. How do you see Pakistan 30 years from now in 2050? Knowing what you know now, having experienced a lot of what you've experienced, how do you see Pakistan 30 years from now? I think our biggest strength is our population. Yes, people say it's a weakness as well. But जो हमारा demographic इस वक्त split आ गया ना, वो gold mine है, किसी के पास नहीं है. जो youth है हमारी, that has a huge opportunity. Yes, there are challenges. Yes, there is education. I can list out one. I'm not being blind to those. I live here, so political, economic and all that. But ये जो हमारी population है, ये हमें बहुत आगे लेके जाने वाली है. अल्लाह ताला ने हमारा खित्ता ऐसा बनाया कि हम बहुत strategically placed भी हैं. The world needs us. Yeah. And the dynamics are also changing in a way that this region is suddenly now becoming very interesting and important. We just have to start becoming selfish. Right. Invest in the right places. You know, services, services is an unlimited growth. Right. 150 billion versus 115 billion. Yeah. This population is an unlimited potential. And a lot of people say, oh, we missed the boat. I don't agree with that. I think digital is just starting, yeah. आप 20 साल पहले मिस की थी, आप आज कैच कर लें. अब कोविड की बोट तो अब आई है ना. हाँ. लेकिन जो सबसे बड़ा है, हमें ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है. ये मेरा decouple yourself from what the government can do for you. Kennedy ने कहा था ना कि यार do what you can do for, don't expect others to do what they can do. कोई कोट है ऐसा. हमें इसको decouple करना है. हम क्रिप तो कर सकते हैं कि यार ये टैक्स रिलीफ नहीं मिला और ये नहीं मिला और डॉलर महंगा हो गया. ऑल ऑफ दैट. I mean, if you can play the hard mode, easy mode तो वैसे ही easy mode आ जाएगा. तो आपको decouple करना है अपने आप को, सोच को कि यार मुझे गवर्नमेंट पे नहीं डिपेंडेंट होना, मुझे अदारों पे नहीं, मुझे एक्सटर्न, मुझे खुद क्या करना है. Create that. Invest in leadership. Invest in your people. Walk the talk. Don't be satisfied. This thing is the big thing. Have the hunger to grow. 100%, sir. Thank you so much for this very, very insightful session. And I hope, inshallah, we see the Pakistan that you envision for us as well. Thank you so much for coming in. And it's been a pleasure. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. आसिफ भाई की किसी बात से आपको एग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. What do you think? What do you think about this growth of systems? It's been incredible, whether be it on the stock market or whether be it actual में. अगर आप देखें तो जो IT से मुंसलिक लोग हैं उनको तो पता है कि it's been incredible and phenomenal. So what do you think about that? Let us know in the comment section below. इसी के साथ साथ YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट हम फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं और आर्टिकल्स शेयर करते हैं. सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ईजी पैसा जायज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा. इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you like. It's a thought that counts. But anyways, this was Muzamil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things in Lahore. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.